So this is the quantification of electric field. We are going to define a vector quantity whose magnitude will tell us which field is stronger. More value of electric field intensity, more stronger will be that electric field. So how we define it? Let's see. Electric field strength at a point in an electric field will be equal to force acting on unit positive test charge placed at that point. Force, suppose there is a space and we want to find out the field intensity of this electric field. There is electric field in this space. So what we do, we will put a test charge Q naught at that place and we'll calculate the force experienced by this charge particle. Suppose this is the force experienced by this charge particle. Then the field intensity at point P of this field will be defined as EP vector. Field intensity at point P is defined as F vector upon Q naught. This is the definition of electric field intensity at any point of the electric field. Force experienced by unit test charge. What is the test charge? Test charge is a positive point charge of very small magnitude, जिसका वैल्यू बहुत कम रखते हैं हम, क्योंकि क्या होगा देखो आप, अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है आपके पॉइंट चार्ज की, ठीक है ना, if value of point charge is very high then it may distort the original field whose strength we are going to calculate. It may displace this charge particles if this value is very large. So the Q naught is the test charge. Test charge means positive point charge of very small magnitude. So yeah, this is, there is doubt on exact test charge is positive or not, but you will take this definition that test charge is a point positive charge of very small magnitude. Okay, some books have written it positive test charge, some only write test charge. So as a test charge, if you somebody asks what is test charge, so point positive charge of very small magnitude. ठीक है, point charge तो होता ही है, but positive भी होता है, तो positive point positive charge of very small magnitude. Point positive charge of test charge is charged with a magnitude so small that placing it at a point has negligible effect on the field around it. तो आप इसको सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, ये आपका टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है ना, ये आपका टेस्ट चार्ज होता है. तो आपको समझ में आया, फील्ड स्ट्रेंथ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, क्यू नॉट चार्ज रखिए, उस पर कैलकुलेट करिए फोर्स फैक्टर, देन डिवाइड दैट फोर्स फैक्टर बाय क्यू नॉट. बट प्लीज टेक केयर कि हम इसको ज्यादा यूज किस तरीके से करने वाले हैं, कि वी विल डिवाइस वेरियस मेथड्स टू फाइंड आउट फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. एंड इफ वी नो दैट दिस इज द स्पेस एंड द पॉइंट हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर, ठीक है, then if we place the point charge q at that point, then force experienced by this charge will be given by qe vector. So this we will use many times. In place of this, we are using this 1000 number of times, that if we know the field intensity at a point and we place a point charge at that point, then the force experienced by this charge will be qe vector. कुछ नहीं किया मैंने, इसको इधर ले गया ना, यूनिट चार्ज का ही फोर्स तो ई वेक्टर होता है, तो क्यू चार्ज पर कितना लगेगा, क्यू ई वेक्टर. ओके, सो दिस इज योर फील्ड इन स्ट्रेंथ. नाउ task in this chapter is you are given various kinds of objects and you have to find out field intensity produced due to those objects. So we will use integration, we will use symmetry arguments in all such procedures. But this is the major task remaining in this chapter. Now find out field intensity. We will study the Gauss law for this specific purpose of finding out field strength. ठीक है, तो this is called field strength or electric field intensity at a point. Force experienced by unit test charge placed at that point. Okay. So we are going to move further now. If there is any doubt in such kind of concepts, please let me know. Then in the next we are going to discuss, this was about field strength. E vector, yes, I have stated already, this is a vector quantity. डायरेक्शन क्या होगी किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन क्या होगी किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की, कोई भी पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, आप उस पर पॉजिटिव चार्ज रखो,
तो पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, भूलना नहीं है बेटा किसी को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज अगर रख देंगे आप, उस पर जो डायरेक्शन होगी वो उस पॉइंट पर ई वेक्टर की डायरेक्शन। तो इससे क्या बात समझ में आती कि एक आपका मान लो ई वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर हमेशा फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ई वेक्टर की। मान लो आपका ये क्यू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इस पर इस डायरेक्शन में क्यू ई वेक्टर है, ठीक है ना। बट अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन हमेशा हमेशा ई वेक्टर के अपोजिट होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यू ही इस डायरेक्शन में लग जाए, समझ रहे हैं बेटा आप। तो आप क्या लिखेंगे जब भी आप पॉजिटिव चार्ज पर, तो आप ये याद रखिए कि आप जो ये एक्सप्रेशन है ना पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर फोर्स का, इसमें क्यू को हमेशा साइन यूज करिए, विद साइन यूज करिए क्यू, ठीक है। Always use q with sign. So if it is positive then it will automatically take the direction of force on positive charge along the e vector, and if it is negative then it will automatically make the direction of force on the negative charge particle opposite to direction of e vector. तो बहुत बेसिक बात है बेटा, फील इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे ये भी कन्वे होता है कि किसी भी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर जो फोर्स होगा दैट इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, एंड इफ यू प्लेस नेगेटिव चार्ज देयर then force on then that negative charge will always be opposite to the direction of e vector. If any doubt in all such concepts, please let me know. I have explained everything about the magnitude and direction of field intensity.